So there is something called as a auto sweep in FD or sweep in FD. Every bank, I mean, there are 2-3 words how it is referred, and most of the banks have this option. So if you can see on my screen, it's called as either auto sweep in facility or sweep in facility. So years ago, when I opened an account in ICICI, I enabled this option. And once it is enabled, I mean, you will have to check with your bank, how to go about it. But once you opt for it, what it does is any amount more than 10,000 in your account, 10,000 के ऊपर जितना भी amount है आपके bank account में, it will be transferred to a flexible FD. It's not a fixed FD, it's a flexible FD. सो आपके जो भी ट्रांजैक्शंस है बैंक में वो नॉर्मल चलेंगे। जब भी आप पैसे डालोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, आपको एफडी ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। एंड आई एम स्पीकिंग इन हिंदी एज somebody requested. So if anybody has a concern with Hindi, then you can tell me and I'll shift to English. So आप अगर आप आपके बैंक में जो भी ट्रांजेक्शन है आपके वैसे ही चलते रहेंगे। इधर एवरी टाइम यू डिपॉजिट मनी आपको वो फ्लेक्सिबल एफडी बनाना होता है डिपेंडिंग ऑन योर बैंक। और सम बैंक्स हैव अ फिक्स ऑप्शन कि एक बार आपने आपके अकाउंट में ये फीचर इनेबल कर दिया तो वो ऑटोमेटिक जितने भी पैसे 10,000 से ज्यादा आपके अकाउंट में है वो ऑटोमेटिक उसके फ्लेक्सिबल एफडी बनाता जाएगा। सो जो भी एफडी के मार्केट रेट होगा वो आपको आपके सेविंग बैंक अकाउंट में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 8% एफडी का रेट चल रहा है तो anywhere between 7 to 8% is what you will get. एंड आपको इसके लिए अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो अगर आपको सेविंग अकाउंट में समझो 4% मिल रहा था और एफडी का समझो 8% है, तो इंस्टेड ऑफ 4% यू विल गेट 8%। एंड यू डोंट एक्चुअली हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दिस। जैसे ही आपके अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी चेक या कुछ भी डिपॉजिट होगा तो बैंक ऑटोमेटिकली वो फ्लेक्सिबल एफडी तोड़ेगा और आपको उसका जो भी इंटरेस्ट है वो आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। एंड यू विल द ट्रांजेक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड एज यूजुअल। सो एज सच इसके लिए आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है एंड येट यू विल गेट एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। देयर हैव बीन कपल ऑफ टाइम्स जब किसी वजह से अगर अकाउंट में पैसे थे till the time I figure out what I want to do or till the time I my SRPs go through, there have been cases जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा like up to like 80,000 और more than that ऐसे टाइप के भी मुझे इंटरेस्ट जमा हुआ है मेरे बैंक में। सो I think it's a very good option which not many people are aware of, and you don't have to necessarily do a lot for this. So I think it has only pros and not that any cons that I am aware of. If anybody has any questions, you can raise your hand and we can discuss. So if you have any questions, you can ask me. Otherwise, I'll shift to the next point. And like I said, I am hoping that all of you, I'll give you an introduction of these options, and I am actually hoping that all of you will work on it on your own, find out a little bit on your own, and explore these options more on your own. And then, like I said, we can have question answers in follow-up sessions, or there is a we have a WhatsApp group. There also you can join and ask these questions. But I'm really hoping that people will take. So you can have, instead of having small dreams, I'll suggest that have really big dreams, but take one step at a time. I don't know how to pronounce this word correctly, Kazan, but it says that every day take one step in the in the direction of your goals, in the direction of your dreams. So uh, don't don't make like try to take a very big bite or try to have a very big jump in one go. Like every day from जहां पे भी आप हो वहां से नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए उसके ऊपर फोकस कीजिए and just take that one next step. So I am really hoping that you guys will use this information, explore it on your own, and then we can have question answer sessions. But in either case, अगर अभी किसी को इस ऑप्शन के बारे में कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज रेज योर हैंड। या छाया मैम पूछिए।
मुझे जो अभी क्या समझा, तो अब अभी पैसा भरना है तो प्रेजेंट में अभी भरना है और उसका एफडी कर सकते हैं। तो आप नॉर्मली जब एफडी करते हैं तो वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में नहीं रहते हैं, राइट? ओके, तो अगर हाँ। आपने चेक जमा किया तो आपको पहले एफडी तोड़ना पड़ेगा, फिर वो चेक आपका पास होगा। पर इस पर्टिकुलर केस में आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा वो एफडी के इक्विवेलेंट होगा। मतलब एफडी का जो भी है उसके आसपास का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, पर पैसे आपके बैंक अकाउंट में ही है। तो आपको एफडी ब्रेक करने का या कुछ करने का जरूरत नहीं है। पर इंस्टेड ऑफ 4% जो आपको सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, आपको 7%, 8% जो भी मार्केट का एफडी का रेट होगा आपके बैंक का होगा वो आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू। You're welcome. So the next option I will like to introduce is NPS. I think it's a great option, and not many people are aware of the benefits of NPS. So NPS is National Pension Scheme, and it gives you market-based returns for the long term. So इसमें it's like bouquet of all the possible options. जितने भी ऑप्शंस हैं, लाइक आपको सेफ साइड इन्वेस्ट करना है तो आप सेफ साइड भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको इक्विटी एक्सपोजर रखना है आप वो भी रख सकते हो, आपको दोनों करना है। लाइक मुझे 50-50 करना है, जितने मेरे पैसे हैं 25% मुझे सेफ साइड रखना है, 75% मुझे इक्विटी बेस्ड रखना है, या 50% मुझे सेफ रखना है, 50% इक्विटी बेस्ड रखना है। तो आपको सारा कॉम्बिनेशन जो है ये अंडर वन रूफ मिलेगा, एंड दिस इज सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट। सो आपको अलग से इसके लिए, मतलब इट्स नॉट लाइक आई मीन इट्स लाइक very strongly suggested, recommended and managed by government authorities, and it's a very safe option. Safe as in your money is safe. The returns, however, depends on market and lot of external factors, but your money is in safe hands. So like I mentioned, it's a long term investment is what people actually think, जिनको पता है, पर ऐसा नहीं है। आप इसमें दो टायर्स हैं, टायर 1 एंड टायर 2। सो एंड इट हैज ऑल द पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस अवेलेबल। आपके पास इतने सारे चॉइसेस हैं। तो शुरू में ऐसा लग सकता है जब आप ओपन करोगे अकाउंट की, देयर इज सो मच टू डिस्कस, देयर इज सो मच टू अंडरस्टैंड। बट एक बार वो शुरू में जो ब्लॉक होता है कि अरे यार देयर इज सो मच टू फिगर आउट, एक बार आप वो कर लोगे स्टेज पास, उसके बाद इट्स अ वेरी इजी थिंग, बिकॉज आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज ऑनलाइन मनी ट्रांसफर आप कर सकते हो। अकाउंट एक बार आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ओपन कर लो, एंड वंस डन योर मनी इज नो जिस तरह से आपको कल लगता है आपको कि मार्केट ऊपर नीचे जाने वाला है, तो उस हिसाब से आप वहीं पे ऑप्शन आपका स्विच भी कर सकते हो कि नहीं मुझे अभी सेफ साइड करना है। आई डोंट थिंक आई वांट टू कीप इट मार्केट एक्सपोज्ड, मार्केट अभी नीचे जाने वाला है, तो सारे ऑप्शंस आप वहीं पे आपको मिल जाएंगे। एंड एट 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 द बटन क्लिक, अभी आजकल एवरीथिंग इज ऑनलाइन, दिस इज ऑल्सो ऑनलाइन। एट जस्ट click of a button you can manage your money and shift it whichever way you want. So um, I will explain a little further. So equity, government bonds, corporate bonds, so many other options are available there. आप एक बार चेक करोगे तो आपको पूरे डिटेल्स मिलेंगे। और आप ऑटोमेटिक भी बोल सकते हो कि आई वांट टू लाइक हैव अ ऑटोमेटिक एलोकेशन ऑफ माय फंड्स, और आप खुद एक्टिवली सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या करना है। इट्स वेरी लो कॉस्ट, उसका जो मैनेजमेंट है दैट फी इज वेरी वेरी नॉमिनल कंपेयर टू म्यूचुअल फंड और एनीथिंग एल्स। इसका जो मैनेजमेंट फीस है इट्स वेरी वेरी नॉमिनल, एंड if you want to, and it also has tax advantage. So अगर आपको टैक्स एडवांटेज चाहिए तो आप उस हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको टैक्स एडवांटेज नहीं चाहिए पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, दैट आई शुड बी एबल टू विथड्रॉ माय मनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। टुडे वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू टू मेनी डिटेल्स, आई वांट टू कीप दिस फर्स्ट सेशन थोड़ा सा लाइट। तो ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाने का जाएंगे इस बार, अगली बार हम जाएंगे। But
So there are two tiers, tier 1 and tier 2. तो tier 2 में there are tax advantages and this is over and above ATC. So there's a very great option. जिनको भी टैक्स बचाना है या हायर ब्रैकेट में है, दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन. सो देयर इटसेल्फ यू गोना मतलब आपको टैक्स भी बचा सकते हैं, फीस कुछ ज्यादा है नहीं कंपेयर टू यूलिप और एनीथिंग एल्स फॉर दैट मैटर, इवन फॉर म्यूचुअल फंड्स. उस हिसाब से ये काफी रीजनेबल है. अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट होते हैं ये पैसे, एंड मतलब म्यूचुअल फंड और शेयर्स में. But like I said, it has all the possible options. It has government bonds, it has corporate bonds, it has all multiple options. और आप जिस भी बैंक के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. और अगर आप टायर 2 में पैसे डालते हैं तो आप कभी भी पैसे डाल सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं. तो आपको ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है. बहुत लोगों को लगता है कि एनपीएस में एक बार पैसे डाल दिए तो रिटायरमेंट में ही मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है. So when you open, आपके लिए कुछ necessary and first you have to open tier 1. So there you have to invest some minimum amount, but that's very nominal, like 500 initial contribution है and 1000 rupees per year आपको करना है, which are very nominal amount. And otherwise आप जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हो, जब चाहे निकाल सकते हो. टायर 2 में, टायर 1 में थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस है कि आप कितने पैसे डालोगे, कितने पैसे कब निकाल सकते हो. सो इफ यू आर नॉट वेरी श्योर, देन यू कैन पुट योर मनी इन टायर 2, एंड देन वंस यू आर श्योर यू कैन मूव इट टू टायर 1 फॉर टैक्स बेनिफिट. So anybody, okay. So anybody, any Indian can invest into NPS. Even NRIs can invest into NPS. So that's also another good option, because NRIs में भी अगर किसी को invest करना है, तो they can also invest in NPS. And generally the returns are better than other options like पीपीएफ है या बाकी सब जगह पे 7% रहता है. तो इस हिसाब से इसमें रेट नॉर्मली अच्छा रहता है, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइसेस एंड डिपेंडिंग अपॉन हाउ मार्केट इज परफॉर्मिंग. बिकॉज अल्टीमेटली आप चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, शेयर्स में इन्वेस्ट करो, जो भी करो, अल्टीमेटली वो शेयर्स में ही जाते हैं पैसे हायर रिटर्न्स के लिए. जब आप बोलते हो इक्विटी बेस्ड, एंड मार्केट कैसा परफॉर्म करता है उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेंगे. बट आई हैव ऑल्सो हैड रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ 30% वगैरह जब मार्केट अच्छा करता है. और लाइक आई सेड, यू कैन मूव योर मनी फ्रॉम इक्विटी टू सेफ साइड, लाइक bonds and all that within the same account. जस्ट विद द क्लिक ऑफ ऑप्शंस आप इजीली मनी सेफ साइड मूव कर सकते हो अगर आपको लगता है मार्केट टूटने वाला है. And normally you get better returns than 7% if you keep it equity exposed. So anywhere between 10 to 30% is what you can expect, but nothing is fixed if you keep it equity exposed. I will suggest you go through these details about how much is the tax advantage and those kind of things, and figure it out for yourself if you are interested. I am just in brief telling you that up to 2 lakh rupees आप इसमें save कर सकते हो tax में. It will become tax free whatever your tax bracket might be. So beyond this, then like you have multiple banks and multiple funds available there जिसमें आप invest कर सकते हो. ICICI, LIC, Kotak, so they have some 8 options, and बहुत सारे डिटेल्स हैं लाइक इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. और इसमें आप कितना कहाँ पे आप डालना चाहते हो ये आपका चॉइस है. आप जब चाहे जिस तरह से चाहे इसे चेंज कर सकते हैं. तो आपको अलग अलग सब जगह पे करने के बदले यू कैन डू दिस.
through this you can invest in multiple funds and multiple options. So whatever your risk appetite is, based on that आप ये कर सकते हो. Anybody has any questions so far? So I will cover this in detail in a little bit later. The next option which we can talk about is SGB. So in अगर आप गोल्ड में सिर्फ इसलिए पैसे डाल रहे हो कि you should get the returns of gold because you think कि gold में invest करना safe है, तो instead of buying a physical gold and having this headache of maintaining this gold somewhere safely and all that, instead of that you can put your money in gold bonds. और उसमें SGB is short form है. सो गोल्ड बॉन्ड्स में जब भी गोल्ड बॉन्ड्स लॉन्च होते हैं आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. और अगर अदरवाइज फिर अगर आपको डीमेट के थ्रू या सेकेंडरी मार्केट में भी आप ये गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं whenever you want, and you get extra what do you say, extra amount for this as well. So instead of having a locker and maintaining a locker or keeping this gold somewhere safe or dealing with the charges जो deductions वगैरह जो भी रहेगा ज्वेलर के यहाँ पे, so instead of dealing with all of that, if it is just purely for investment purpose, that you are dealing with these putting your money in gold, in that case you can opt for gold bonds. Like I said, today I'm just trying to introduce various concepts and not get into too many details of these. So I'll keep it short even about this gold bonds as well. And moving on to the another topic. So I'm hoping that all of you are aware that if you're a working professional, then you have an option of PF, Provident Fund. So in that also you can put extra money, voluntary Provident Fund. If that is your preferred option, then you can always increase the amount that you want to contribute. So that is another option that you have. Mutual fund. So in short, what mutual fund does is, every mutual fund has a, like target companies, set of companies that it वो उसमें invest करते हैं. So what they in turn do is they invest into shares of the companies. So mutual funds के लिए इसलिए बोलते हैं कि mutual funds are subject to market risks because how the company does, how the share market performs, उसके हिसाब से आपको returns मिलते हैं. And depending again here also depending upon your risk appetite, अगर आपको सेफ साइड रखना है तो उसमें भी डेट फंड वगैरह के ऑप्शंस होते हैं. अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो यू कैन पुट अकॉर्डिंग टू दोज म्यूचुअल फंड्स. दे चार्ज सम नॉमिनल एंट्री फी, some nominal maintenance, to maintain the fund they charge some fees, but they are very nominal again. Obviously they are more than NPS. NPS is very very nominal fees compared to mutual fund, and you can invest in different mutual funds as per your risk appetite. और जब भी आपको चाहे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बाहर आ सकते हो. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सेविंग टैक्स देन म्यूचुअल फंड में भी टैक्स सेविंग ऑप्शंस होते हैं, तो आप वो वैसे वाले में इन्वेस्ट कर सकते हो. आपको टैक्स का कंसर्न नहीं है देन यू कैन अकॉर्डिंगली सेलेक्ट इक्विटी बेस्ड और नॉन इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स. इसमें भी there are plethora of options and you can check these options based on your risk appetite. तो
when you start small, take baby steps, one thing at a time, explore करते करते अगर आप चाहोगे तो you will figure out what works for you. And jitna the one risky thing that people do and we normally hear is कि शेयर मार्केट में बहुत लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया. जब आप म्यूचुअल फंड लेते हो तो गुड थिंग इज दे आर इन्वेस्टिंग इनटू मल्टीपल कंपनीज, तो आपका रिस्क कम हो जाता है. इट डज नॉट एलिमिनेट द रिस्क, पर आपका रिस्क कम हो जाता है. सो एक ही कंपनी में जब आप ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं और वो कंपनी डूब जाती है तो प्रॉब्लम आता है लोगों को. दैट्स वन. सेकंड, ट्रेडिंग में बहुत लोग बहुत पैसा डाल देते हैं एंड ट्रेडिंग इज अ रिस्की बिजनेस बिकॉज मार्केट प्रेडिक्शंस पे चलता है बहुत बार, और बिकॉज ऑफ दैट इट कैन रियली फ्लक्चुएट इन अ डे. बट अगर आप सेफ वाले ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, सेफ वाले म्यूचुअल फंड्स या शेयर सेलेक्ट करते हैं, तो योर रिस्क इज मच रिड्यूस्ड if not eliminated. And blue chip shares normally, my experience is that they work well. So अगर आपको ज्यादा नहीं एक्सप्लोर करना है तो a good option is you put into blue chip funds or blue chip shares or something, companies that you are well aware of. But in either case, as long as you are not taking too many big risk or taking too many like putting your money into unknown shares, I have had a very good experience. I've had great uh, like for that matter really good returns from all these investment options. I don't necessarily I will not be venturing into risky areas like trading or anything of that sort. So penny shares and certain shares and when you get into these, that's when things get risky. But compared to that, NPS mutual funds are very safe, and you don't have to know everything or you don't have to manage everything. uh, all you have to do is just select few options and your money is well managed. So I will suggest ki aap when you start with these things instead of getting into risky business. uh, Also a lot of people not aware about term insurance. जब आप एक ही पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस लेते हैं so you don't get much insurance also and you don't get much returns also. So normally it's highly recommended that you uh, select an option which is only focused on one goal. अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप वैसे वाले ऑप्शन सिलेक्ट करिए. अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो आप टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए. You will for a much lesser price you will get much bigger coverage. So instead of opting for a policy which is trying to do two three things, opt for something that is focusing on one thing only. And especially for working people जिनके ऊपर बहुत liabilities हैं या बहुत responsibilities हैं, it is highly recommended that you take term insurance, especially if you have loans. There are more than a few, I mean, like more than one or two people dependent on you, then it is highly recommended that you take term insurance. For home loan also, I'll share my experience. I will check the current market status and current updates and we'll cover it in next session. But from my experience, what I know is जब RBI rate कम करता है, तो not all banks reduce their rate for existing customers. जो आपका loan का rate है, home loan का. So I think I got really lucky that I had a home loan with Citibank. And जब भी they gave me great service no matter which part of the world I was in. I never had to go to bank. I never had to do anything. Everything was online, or they used to visit me. So I think I feel that
I've always had really strong positive thoughts when it came to money, and it really worked wonders for me. So I'll share a little bit of my personal experience here. So I have received bonuses very unexpectedly or during the job switches, like 20-30% is ideally what we get in IT, hike. But I feel that I've been lucky to get like 100% hikes as well. So, what is your approach towards money? Even if there is a recession in market, even if there are other challenges in the market, uh, what is your approach? That really makes a huge difference. So this thing also helped me, when it came to loans. Like when I took loan, I took it from Citibank, and they gave me City Gold membership. I don't know how many of you are aware, but it's a premium customer and premium treatment that they give you, and they serve you all, like no matter where in the world you are. So I got tons and tons of benefits when I took loan from Citibank, and it was a great experience for me compared to other banks. I think they really treat their customers very very well, though they are not present in India anymore from this year. But it was a great experience. So every time RBI would reduce rate, I would contact them and I would ask them to reduce my rate as well. And normally banks charge some fees and some process, ask you to follow some process for that, for rate reduction. But thankfully, Citibank never did that. And all I had to do was I had a relationship manager allocated to me. So I would start following up with him and get my rate of interest reduced for home loan. So anybody who has a home loan should keep a check on this, because unless you really check it, a lot of banks don't necessarily reduce your rate of interest. So that is one. Another thing that worked really well for me was I always kept the EMI part low, because a considerable part, especially in the early years of your loan, goes towards interest. So if your EMI is, say, for example, 2 lakhs, yearly, I'm just taking a 10, like an example amount, just a figure, you know. So out of 2 lakhs, as good as 1 lakh or 1.5 lakhs in the early stage of your loan goes towards interest. And because of that, your loan amount doesn't reduce as much. So what I would do, and what worked for me was, I would keep the EMI the lowest that they will allow, and whatever amount I will have surplus, I will do the prepayment, and prepayment directly goes to principal. So for example, if you have 3 lakhs loan, um, and when you make a earlier payment for the home loan, from this 3 lakhs, actually 2 lakh go to interest and 1 lakh goes to principal. So that's not going to be a great reduction in your home loan amount. So instead of that, if you keep the EMI, say 2 lakh rupees, so 1 lakh, 1.5 lakh will go towards your interest, and 50,000 will go towards your principal. But then surplus amount, that 1 lakh rupees that you've kept your EMI low, that will go towards your principal. So in the end, your your loan amount will reduce much faster. So these are very simple steps, and they really in turn save a lot of money. It's a great savings, and your money saved is money earned. So your money saved and invested in the right places is going to earn money for you as well. So I have had a lot of um, areas where I've out of nowhere suddenly received money or received gifts or bonuses and things like that. So keep that awareness as to what are your thoughts about money, what are your thoughts about these things. The more positive thoughts you have, the better situations are going to get for you. And I'm sure if you have attended any of the sessions, whether it is Magic Book or Shinaz Daga or anything,
you would have had some or other experiences where things have worked wonders for you as soon as you start thinking positive, whether it is a relationship, whether it is job, whether it is business, whether it is your health, any areas. As soon as you start thinking positive, it is going to do wonders for you. So anybody has any questions? Give me just 1 minute. Also, the one more option which is there is, there are gold ETFs as well and silver ETFs as well. So again, if you don't want to invest in gold bonds, then you can opt for ETF. Again, another way to, have without any headache advantage of gold rates hike. अगर आप गोल्ड में पैसे इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि यू थिंक इट्स अ सेफ हेवन, विच आई थिंक इंडिया में बहुत कॉमन है, बहुत लोगों को लगता है कि गोल्ड इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट. सो अगर आपको ऐसा लगता है, सो आप ईटीएफ इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडेड फंड, सो इसमें भी आप पैसे डाल सकते हैं एंड यू कैन गेट द एडवांटेज ऑफ जो भी गोल्ड में रेट हाइक हो रहा है उसका. एंड द गुड थिंग इज दैट इफ यू थिंक कि आपको इन्वेस्ट करना है तब तक आप करो, एंड एवरीथिंग इज ऑनलाइन. सो अगर आपको लगता है यू कैन इजीली क्विट इट, एंड जो भी सारा फिजिकल गोल्ड का हेडेक है, without that you get the benefit of all the benefits of hike of rate without all the headache. So that's another option that you can opt for. One thing that I would like to cover. So I attended a session on emotional intelligence, and the second part of these sessions would be to be aware of your own thoughts and beliefs. So I'll cover one example which I learned from there. So लाइक अगर मैं पूना में रहती हूँ, तो अगर आप रात को ट्रैवल करके अर्ली मॉर्निंग पूना पहुंचे, पुणे स्टेशन ट्रेन से, सो you see that at station there are these rickshaw guys who are charging anything like way too higher than meter, and like multiple times, not some nominal, like 100 रुपए होने वाले हैं तो 150 या 125 नहीं मांगते, वो डायरेक्ट 200 और 400 मांगते हैं. तो एक बार I had come to station after 5 o'clock, and मतलब अगर आप 6 बजे के आसपास आए हो तो आपको नॉर्मल डे चार्जेस लगने चाहिए, ना कि नाइट के चार्जेस जो 1.5 गुना है. तो I came home. Once I reached home,
the guy asked double the price, and I was like, "Abhi to daytime ke charges hai, so why are you asking these charges?" Normally, uh, so I was pretty upset with that, and it wasn't a very pleasant conversation. थोड़ा बहुत कुछ तो कहा सुनी there was little bit of uh, not so pleasant conversation, and I was like, you guys are always charging more, आप लोग लूट नहीं बैठे हैं and all that. And once it was settled and I came back home, I just during this session I just realized that uh, that guy had waited entire night so that people like me, once they reach Pune early morning, will reach home. uh, though I had boarded the rickshaw after those timings, still उसने तो पूरी रात वहां पे रुका था ना. So he had waited the entire night, and if you are well to do, that amount wasn't that big. And normally जो हमारा उनके लिए थॉट होता है कि ये तो लूटने ही बैठे हैं, सो वी ऑपरेट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. सो बहुत बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले की सिचुएशन नहीं देखते हैं, हम पूरे फैक्ट्स नहीं देखते हैं. वी आर जस्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम आवर ओन बिलीफ. So the more aware you are about these beliefs, the more we understand others' perspective, the more easily we are able to communicate with people and find solutions and find answers. So what I want that while we are sharing this technical knowledge about investments, about money, at the same time, I'm also hoping that we will all get more aware about our thought process when it comes to money. अगर आप देखते हो किसी को बहुत अच्छे से टैक्स फाइल करते वक्त, या अगर आपको किसी ने बोला कि आईटीआर फाइल करो, तो आप क्या सोच रहे हो? डू यू थिंक यू कैन डू इट, और डू यू थिंक कि नहीं नहीं यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो आई हैव टू आस्क समबडी. अर्ली पार्ट ऑफ माय करियर मैं किसी और को बोलती थी मेरा आईटीआर फाइल करने, और मुझे ऐसा लगता था कि यार जितना टाइम उसको एक्सप्लेन करने में जा रहा है इतनी सारी चीजें, because since beginning I've been investing in multiple options, and I've been very active finding out various options. So उस वक्त लोन के होम लोन के इंटरेस्ट पे कुछ कैप था, but if you had rented out the apartment, then that cap was not there. So I will have such kind of options which I have opted for, which I have googled for, or I'll find out from people, and then I had to explain all of this to those people, and yet they'll end up making a lot of mistakes. So I ultimately had to educate them about what I'm talking about. And also a lot of couple of times I had to speak to my company people as well as to what options I'm opting for. So certain companies did not have those options, and मुझे जाके उनको बताना पड़ता था कि this is what I'm doing, and this is something that you should allow me for tax deduction. So then after a couple of such experiences, I started filing my ITR on my own, and I started doing these things on my own. इट इज जस्ट द फर्स्ट टाइम जब आप करते हो, आपको थोड़ा सा लगता है कि यार ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें टाइम जा रहा है समझने के लिए. बट एंड है हमारा टैक्स सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड भी है, बट वंस यू गेट पास्ट दैट स्टेज, तो यू स्टार्ट डूइंग इट विथ मच ईज. इट्स लाइक एवरीथिंग एल्स. फर्स्ट टाइम जब आप कुछ भी करते हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, यू आर अ होम मेकर, आप घर पे अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, खाना जल गया, कम पड़ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो आप ये नहीं सोचते हो कि अरे आप आज तो खाना बन नहीं सकता, आज तो मतलब हम फंस गए. यू फाइंड अ सोल्यूशन. खाना चिपक गया है, जल गया है, यू फाइंड अ सोल्यूशन. इसी with that same approach, अगर आप फाइनेंस के लिए सोचते हैं, if you think that you can do it, then you will be able to find the ways to do it. And last many years मैं अपना ITR खुद ही फाइल करती हूँ, and that works much faster and much easier for me. I do my own investments, I do my own money management, I take all these decisions, and they happen much faster once you have figured it out. And I have a friend
my colleague called as Samir Purohit. So we, like I said in the beginning, we have a group of IT people who discuss these things together on WhatsApp, and his community is there, on social media as well. So any kind of comments, he's a IT person, he's not into business. None of these things we are doing for money, or we don't charge anybody for anything. We are just doing this as a hobby or a passion. And I'm doing this for one more reason. One is, yeah, there were many people who asked me for this session, and second is that I'm doing landmark courses right now, and as a part of that, I'm supposed to do some community project or something where I'm doing something. So yeah, I'm doing for that reason. These reasons, I'm not doing this for money. So same is with Samir. He's also doing these things for his hobby and passion, and we are connected since many years. And अगर आपको कोई भी doubts हैं, details चाहिए, there are so many more options available. SSY for young girls. So those senior citizen schemes, different types of mutual funds, NPS के पूरे details, how to opt for NPS, and all the possible options which are there for in available in NPS. All of these things we discuss in that group. I've learned so much from him. Is one of the persons who has guided me throughout. So if you are interested, you can join his finance group as well, and you can ask him these questions as well. I really hope that sooner or later he'll be available. He'll join these sessions, and meet, talk to you guys as well. He's undergoing some trainings this month, so right now he's not available. If anybody had attended my earlier quick intro finance session, to intro to finance sessions, then Samir had attended that session that point of time. But in either case, if you guys are interested, then you can connect with him, join, and find more information. Um, so I hope you guys will, decide for yourself what are your priorities, and work on these things, and like make use of this knowledge. बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि बहुत सारा चीजें ले लेते हैं, but somewhere our thoughts are कि नहीं नहीं, it will take time, I won't be able to do this, it's not easy for me, it's way too complicated, it's not worth it. So whatever your thoughts are, instead of getting stuck with those reasons, I will highly recommend that you take those actions, and take one step at a time, like Kaizan, and move forward. So if anybody has anything to share, any questions, any suggestions, we have few minutes at hand, so please do share. If you have anything to share or suggest, please do. थैंक यू रिम्पल, आपकी गाइडेंस मिली। मेरा नाम विजय है, ओके, बॉम्बे से बोल रहा हूँ। मैं आपके ग्रुप में हूँ अभी। मैंने लेट स्टार्ट किया था, बल्कि फ्यूचर में डेफिनेटली हम लोग आपकी गाइड लूंगा। मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो कभी भी आपका नंबर मैं सेव करके रखता हूँ। आपको हम लोग पर्सनली भी, मेरी सेक्रेटरी, हम लोग गाइड टेलीफोन करके पूछ सकते हैं या कैसे कर सकते हैं? Like I said, आप पूछ सकते हैं, but then we all are working people, so there will be some limitations to phone calls या messages. So that is exactly why I proposed कि उस group में, as a group, we help each other. जो group का मैंने, so it's a finance community, and we all discuss our finance related questions and answers. So it will be better to join that, because वहाँ पे already इसी purpose के लिए, इसी that forum and that community is there. But yeah, as and when possible, we'll definitely try to answer your questions, queries, or whatever help you need. ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू, थैंक यू। You're most welcome. And anybody who is sharing or asking, I would love to see you guys. So please switch on videos if you can, when sharing especially.
एंड आई विल रादर सजेस्ट कि आप लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं आप यहीं पे पूछ लें, बिकॉज दिस दो सेम क्वेश्चंस बाकी लोगों को भी होंगे तो वो ऑटोमेटिक आंसर हो जाएंगे. सो इट विल हेल्प टू आस्क क्वेश्चंस ऑन दिस प्लेटफॉर्म. हेलो मैम. हेलो मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन. आपने जो गोल्ड बॉन्ड का बताया वो एक्चुअली पता नहीं था, सो उसकी डिटेल जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? सेम आंसर कि ये जो ग्रुप मैंने बोला था मैं उसकी डिटेल शेयर करती हूँ, आप वहां पे ज्वाइन कर लो. एक बार आप वो थोड़ा बहुत ही सही सी जो अगर ये नया कॉन्सेप्ट है, जब आपको उस ग्रुप में ज्वाइन करोगे तो हो सकता है कि थोड़े लंबे आंसर्स लगेंगे, राइट? तो आपको सारा समझ में नहीं आएगा, हो सकता है आपको दो चीजें ही समझ में आए, हो सकता है आपको एक ही पॉइंट समझ में आए, पर आपको एक आइडिया आ जाएगा, राइट? एंड देन आगे के सेशंस में हम वैसे भी डिटेल्स में कवर करेंगे जितना जितना जो जो टॉपिक्स पॉसिबल है. सो वी विल डेफिनेटली बी कवरिंग दीज गोल्ड बॉन्ड्स एज वेल, बट आपको एक आइडिया आना स्टार्ट हो जाएगा. इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स. और उसके बाद फिर हम डेफिनेटली क्वेश्चन आंसर्स में भी ये आंसर करेंगे. बट लाइक आई सेड, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, रादर समीर might be far better expert than I am. So वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप सारी इंफॉर्मेशन ले लेंगे एंड बाकी का फिर हम यहाँ पे कवर करेंगे. और ये सब आसान है, सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. आजकल हर चीज का यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है. क्या होता है, हमें पता नहीं होता है कि ये ऑप्शन है, तो आप यूट्यूब पे जा हाँ, तो आप यूट्यूब पे जाके भी चेक कर सकते हैं. कम्युनिटी भी है और हम आगे फॉलोअप सेशंस भी लेने वाले हैं. थैंक यू वेरी मच मैम. You're welcome. But I would love कि लोग खुद से भी थोड़ा देखें और आगे शेयर करें यहाँ पे. इवन जैसे हम मैजिक बुक में कर रहे हैं कि हम अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वैसे यहाँ पे भी आई विल लव फॉर पीपल टू मे बी शेयर समथिंग दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ. So I am rather looking forward to people who will do that. Rimple, is there in this financial scheme like something called a fixed deposit tax free? So 5 years वाला जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसको टैक्स फ्री होता है, अरे टैक्स बेनिफिट्स होते हैं. So that is definitely there. What is that called? Like, I mean, it's only with the bank or it's something? As far as I know, it's with the banks, financial institutions. 5 years का जो FD होता है, it has tax benefits. Okay. संध्या मैम, आप और कुछ बोलना चाह रहे थे या you are done? No, ma'am, no. I'll do that. I said I'll do that. Like Magic Book, you have said that you have to find some more information. Yes. So and definitely I'll do that. Thank you. I'm very. आप तो इतने सालों से connected हो, so I'm rather expecting active members who will participate and contribute. So Cecilia, if you want, I'll cover this topic as well in the coming sessions. So Yeah. You can post your queries in the group. और अगर आपके कोई specific queries है, so I'll try to incorporate those points as well. Yeah. Sure. या सुधा जी बोलिए. Hi Dimple, good morning. Good morning. ये मुझे ये पूछना था ना, जो जब मैं इधर हम लोग मेरा हस्बैंड का रिटायर हो गया है तो हम लोग दुबई में ही है, लेकिन जब तक मैं इंडिया जाती हूँ ना तो मतलब सॉरी अगस्त ऐसा हो जाता है, तो वो जो इनकम टैक्स का होता है ना, तो मार्च तक एंड होता है, तो मतलब एंड मतलब उस वक्त ना तो हमें उसके लिए ना एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ता है. तो so is there anywhere so can I learn or some person to make a income tax file? Sorry, can you repeat the last line? जी, मैं ना मतलब जब मतलब जो मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, तो सीए, तो मतलब मैं जब जाती हूँ, मैं इनकम टैक्स फाइल करती हूँ, तो अगस्त तक तो मेरा तो मतलब उस पे वो डिले हो जाता है, फाइन. जी, फाइन लगता है. But there are so many apps जो जिससे आप फाइल कर सकते हो, which are like where it is easier to file ये ITR, and also online आजकल तो करना possible होना चाहिए. So unless there is a specific requirement why you need to do it in person,
I think you should be able to explore. मैं और मेरा हस्बैंड को भी इसमें ना completely no idea. So मैं पूछ रही हूँ कि जैसे कि जो चार्टर अकाउंट मेरे फाइल इनकम टैक्स का देखता है, तो शायद मैं मतलब कोई ऐसा लोग होता है कि मैं उससे वो मेरा इनकम टैक्स खुद फाइल करने के लिए मैं सीख लूँ ना, तो ऐसा कोई है तो होता है? Like I said, हमारी एक कम्युनिटी है, तो उसमें जो समीर करके है, he helps people and he has helped a lot of us to, you know, जहाँ पे भी हम stuck होते थे या कुछ रहता था, तो he has been guiding us and I'm really hoping that he'll find time to attend this session next time it is. So yeah, I am not available next Sunday, but उसके बाद वाले Sunday we will have another session where I'll cover more details. You know, I'll take up one option and then we'll cover it in a little bit more detail. But like I said, you know, you can definitely connect on that group and you can ask your questions. This is नहीं, फाइनेंस का जो कम्युनिटी का मैं बोल रही हूँ, हाँ, और वहाँ पे, हाँ, तो वहां पे आप पूछ सकते हो आपके क्वेरीज एंड स्लोली यू विल फाइंड आंसर्स. ऑनलाइन आप धीरे धीरे एक्सप्लोर करोगे, इट मे टेक सम टाइम. आप नो, आप जॉब कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो? No, actually I was a housemaker. I'm a housemaker, अच्छा. homemaker. Yeah. So completely I don't have any idea about this one, about regarding the money also. So 2020 he got retirement, no? So हम लोग इंडिया गए थे, तो मैं वो जो मेरा जो इधर का जो पैसा था फिक्स डिपॉजिट में रखने के लिए भी बैंकर से ही पूछे थे, तो वही सजेस्ट किया था. मालूम नहीं, मतलब आई डोंट नो इट इज इन द प्रॉपर प्लेस और आई डोंट नो. Okay. So I will I'll suggest कि आप वो कम्युनिटी ज्वाइन करो. हम आगे के सेशन में विल ट्राई टू सी इफ वी कैन कवर समथिंग अबाउट द टैक्सेशन. लाइक आई सेड, अभी हम टैक्स वाला एरिया कवर नहीं करने का कोई प्लान है, बट अगर ज्यादा लोगों को ऐसे कुछ क्वेरीज हैं देन विल ट्राई टू कवर. एंड इनिशियल गाइडेंस आपको, या इनिशियल मतलब अभी के लिए तो गाइडेंस आपको उस ग्रुप में मिल सकता है. ओके, थैंक यू. मैं वो ग्रुप पे फाइनेंस ग्रुप है, तो वो उसमें हूँ मैं. नहीं, ये जो ग्रुप है इसमें तो हम सिर्फ सेशंस ले रहे हैं, और जो फाइनेंस का ग्रुप है उसकी डिटेल्स में डालूंगी, तो जिनको जिनको यू नो दे आर इंटरेस्टेड दे कैन जॉइन दैट ग्रुप. बट कीप इन माइंड दैट वी आर नॉट the experts or professionals. We do not charge anything, but at the same time, you know, we might take our time to reply to your queries. Okay, thank you. You're welcome. Sure. Yeah, I was also in the Seven Sagas, this one retreat. I saw you there. Oh, great. So अगर आप वीडियो ऑन करोगे तो मैं भी आपको पहचान पाऊंगी. 1 second. Oh, Hi. yes. Hi. Yes, we spoke it. Right. Great. Yeah. Nice, great to meet you. Thank you. Same here. Same here. Thank you. So, if anybody else has anything to share, please do. Otherwise, we are done for today. So thank you everybody for giving me this opportunity to share and contribute, and thank you so much. And Thank you, ma'am. thank you. So see you not coming Sunday, uske baad wala Sunday, after 2 Thank you, weeks. Dimple. Thank you.